So class, today's topic is about HTML links. Okay, so I'll tell you about why we use hyperlink for today's class. So basically, the acronym HTML stands for hypertext. It means that is a text that links to the other information. HTML enables us to link to the other web pages. We can connect with the graphics, multimedia, emails, and other downloadable files. Anything that you can access through the browser, you can link with the HTML document. Okay, now every web page contains so many links that can take to you directly to the page or any specific part of the page. So these are like these links are basically called hyperlink. Okay, and hyperlink can be anything like a text, an image, or any other object in a HTML document that can take to you to another connected document. So we can say that our hyperlinks can be distinguished between either external or internal to a current page. Okay, so hyperlink का मतलब क्या होता है? Basically it's a normal text on which when you click, so वो आपको दूसरे document के साथ connect कर देता है. Because internet is basically what? It is a interconnection of multiple documents. Okay, now let's discuss how we can create hyperlinks in an HTML document. So in HTML, we have a specific tag that is called a tag or sometimes called anchor tag. So anything between this anchor tag is considered as a link, as a hypertext. When we click on that link, we will connect to the other linked document. So see, this is a basic syntax how we can create an anchor tag in HTML. Okay, so first of all, we should have a tag. Okay, a tag has contains several attributes, but one of the important attribute that generally used is called hrefs. Is called hrefs. So let's talk about practically how we can create a hyperlink in HTML document. So let me take to you to the VS Code editor. ओके, तो यहाँ पर जाके हम एक फाइल क्रिएट करते हैं. लेट्स क्रिएट अ फाइल नेम्ड class 6 because currently we are doing class 6 ना. This is our class 6. तो हम यहाँ पर एक class 6.html बनाते हैं. ओके, नाउ लेट्स क्रिएट द boilerplate जिसे हम skeleton भी बोलते हैं. And here I am writing HTML hyperlinking. Okay, now let's create the first tag that is called a tag. So मैं यहाँ पर a press करता हूँ and see when we press the enter button it will create the basic anchor tag. Okay, now there is one more important word attribute that is called hrefs. Now what is hrefs? Hrefs means the link to the reference document. जिस भी लिंक के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो वो आप इस hrefs के अंदर लिखोगे. Now I'll tell you, हमारा जो हाइपर लिंकिंग होती है वो दो तरह की होती है. One is called external linking. External linking means आप करंट डॉक्यूमेंट से किसी अदर डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो या आप अपने डॉक्यूमेंट से किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से लिंक कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग. ओके, मीन्स व्हेन यू आर इन योर करंट डॉक्यूमेंट एंड यू वांट टू लिंक टू द अनदर डॉक्यूमेंट आइदर ऑन द सेम प्रोजेक्ट, अपनी ही वेबसाइट के अंदर आप किसी पेज से कनेक्ट करना चाहते हो, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग. या अपनी वेबसाइट से आप किसी और वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लिंकिंग. So first of all, I'm going to explain what is external linking. So I'm here, I'm just writing external linking. Okay, I'm making comment. Now, अब इस एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पर एच रेफरेंस डालने वाला हूँ. अभी क्या करने वाला हूँ, मैं अपने ही वेबसाइट के अपने ही प्रोजेक्ट के क्लास 1 से लिंक करना चाहता हूँ. So we have to provide the address of class1.html. Now this class1 is in the root folder, जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसी के ऊपर है. So how to access the current working directory? You have to write dot slash. This dot slash means current working directory or current directory or root directory. Okay, now इस directory के ऊपर ही मेरे पास class1.html है. Okay, now so I have provide the reference. Now in the a tag we have to provide some text or something.
So I am providing the text here. So I'm saying link to class 1, link to class 1. Now this will be a hypertext. This is not a normal text because it is enclosed in the anchor tag. Okay, let me save the code. Now I'm going to open this in a browser. Now see here, you can find that this is not a normal text. See how we can be a not a normal text. See whenever I move my cursor, मैं अपना जो cursor है, pointer है, जब मैं इस text के ऊपर लेके जाता हूँ, so see the cursor style have been changed. It's from this pointer to a hand movement. So it means this text is a hyperlink. Okay, now whenever I move my text over the text, आपको एक और चीज भी दिखेगी यहाँ पर नीचे, यहाँ पर, ठीक है. नाउ दिस इज द एड्रेस ऑफ द रेफरेंस डॉक्यूमेंट. जब अपना आप हैंड मूवमेंट इसके ऊपर लेके जाओगे, आपको नीचे उसका एक रेफरेंस लिंक मिलेगा, रेफरेंस एड्रेस वहां पर आपको शो होगा. तो इट मींस दैट इट इज अ रेफरेंस लिंक. ओके, नाउ सी अब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ. जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा एंड यू विल फाइंड, सी आई एम कनेक्टेड टू द क्लास 1. देखो यहाँ पर क्लास 1 के साथ मैं कनेक्ट हो चुका हूँ. ओके, एंड दिस इज द क्लास 1 डॉक्यूमेंट. ओके, जो हमने क्लास 1 में पढ़ा था. तो इफ आई क्लिक बैक बटन, मैं वापस अपने क्लास 6 के अंदर आ जाता हूँ. सी HTML लिंकिंग. So it means this is not a normal text, this is a hypertext. और let's create another link. हम एक और लिंक बनाते हैं. Let's create a BR और इसके नीचे मैं फिर से इस हैंकर टैग को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ. Now I am going to write class 2. मैं इस पे class 2 लिखने वाला हूँ. So it means now this is another link to class 2. Let me save it and you can find whenever I refresh the screen. Now this is a link to the class 2. Again I am clicking on this link, so the class 2 will be open. Okay, and whenever I move my mouse, अगर मैं इसके ऊपर माउस मूव करता हूँ तो आप नीचे देख सकते हो वहां पर class2.html लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है, दैट मीन्स दैट इज अ स्टेटस बार. जो स्टेटस बार होता है उस पर आपको लिंक दिखता है. तो इट मीन्स दिस इज अ हाइपर लिंक. नाउ अब हम इसके अंदर कुछ, दिस इज एन एक्सटर्नल लिंक. हमने बात की थी एक्सटर्नल लिंकिंग टू अ सेम वेबसाइट. अभी तक ये सेम ही वेबसाइट या वेब प्रोजेक्ट के अंदर है. नाउ अभी मैं एक्सटर्नल लिंक बनाने जा रहा हूँ टू द अनदर वेबसाइट. सो कैसे बनाएंगे? सो अगेन आई एम राइटिंग ए टैग, एक BR क्रिएट कर लेते हैं. ओके, नाउ अब इस H रेफरेंस के अंदर मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल रहा हूँ, दैट इज betalabs.in. सो आई राइट http www.betalabs.in. now this is an external link, this is not a link to your internal page. जो आपका पेज है उसके साथ लिंक नहीं कर रहे. अभी मैं अपने अनदर वेबसाइट के साथ लिंक कर रहा हूँ. सो आई एम राइटिंग वेबसाइट, आई एम राइटिंग बीटा लैब्स. Okay, so this is a text that will be displayed onto the screen. Okay, now I'm going to save the code, go back, and when I refresh the screen, there is another link. There is another link. Okay, now when I click on this link, and you will find out the address is showing as betalabs.in. Okay, let me correct this. It's Beta Labs. Okay, refresh again. So when I click on this link, I will redirect to my website. See, now Beta Labs will be open in the document. Okay. Okay, there is a problem. See, जब भी मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो लिंक आपके सेम ही डॉक्यूमेंट के ओपन हो जाता है. देखो, दिस इज द डॉक्यूमेंट, मैं अभी हाइपर लिंकिंग के ऊपर हूँ. जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, सो जो आपका कनेक्टेड डॉक्यूमेंट होता है या लिंक्ड डॉक्यूमेंट होता है वो आपके सेम ही टैब में ओपन हो रहा है. नाउ इफ आई वांट दैट द लिंक टू बी ओपन इन अ सेपरेट टैब, सेपरेट न्यू टैब, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक, अभी मैं एक और लिंक क्रिएट करने वाला हूँ. और या सिंपली यू कैन जस्ट add the target attribute. There is an attribute of an anchor tag that is called target. इसकी multiple values होती हैं. See, but the value that we are going to be used here underscore blank. Now underscore blank means I am going to open this reference link into a new tab. So that's right, create a new blank document, new blank tab, and open that link into that particular tabs. Okay, let me save the code. Okay, go back. Now I'm going to click on this link. Now see, it will be open in a separate tab. हमारे पास ये hyperlink भी है, and you can see that the Beta Labs is open into a separate tab. So we can use the target attribute. Now let's
टॉक अबाउट वन मोर एट्रीब्यूट, मैं इसके ऊपर BR एक और लगा देता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ बीटा लैब्स आई एम राइटिंग google.com. Okay, now another attribute I'm specifying the self is the same thing, like जो बिना target attribute को देते हैं, that is also a self. Okay, let me save it, and here I'm, instead of beta labs I'm writing Google. Okay, now let's save the code, and you will find there is another link on your page. Now when I click on this link, see, the Google website will be open into the Google search website will be open into the same tab. So self means in the same. So अगर आप self ना लगाएं, so it will by default open into a self. So if you want that it should be open into a separate tab, so you should specify the blank. Okay, now let's see, when I click on this link, it will be open into a separate tab. Okay, so this is what we called the target attribute. So target will always open the link into a separate tab. Now there is a question कि अगर मुझे इस लिंक को एक सेपरेट विंडो में ओपन करना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इनटू बाय लॉट्स ऑफ स्टूडेंट की नए ब्लैंक टैब के अंदर होगा, बट आई वांट दैट इट शुड बी ओपन इनटू अ न्यू विंडो, it should be open into a new window. So in HTML there is no specific attribute that can be used to open the reference document to a new window, but you can also use a JavaScript. So that JavaScript helps you to open the link into a separate new window. Okay, but for the sake of I'm just taking to you to my website, जहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है कि how we can connect to a separate C. Now if you want to open the link into a new window instead of a new tab, you can use JavaScript. हम यहाँ पर JavaScript का यूज कर सकते हैं. Yeah, I know बहुत सारे there are so many person here, so many students here who don't know that JavaScript क्या होता है. Okay, so for the sake of explanation कि हाँ हम इसको separate new document के अंदर भी open कर सकते हैं. I just copy the link, मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बट हाँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे in the coming classes. So let me just copy the code and I'm just pasting here. Okay, now see, this is the H reference ना, वही जो हमने अभी यूज किया था, but I want on click. See, we have some attribute, हमारे पास additional on attributes होते हैं, जिसे हम एक events बोलते हैं, core event. So this is an event, this is an event. So this event saying that windows dot open, see हमारा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जो दिस डॉट एच रेफरेंस, तो इस रेफरेंस को ओपन करें इन अ न्यू विंडो, उसकी विड्थ कितनी होगी 300 by 250 एंड रीसाइजेबल एंड स्क्रोलेबल. लेट मी सेव द कोड एंड यू विल फाइंड. Okay, I'm refreshing the screen. Now when I click on this Google link, it will be not open in a new tab, it's open into a new window. See, now this window has been, now see मैंने इसको resize कर सकता हूँ because I have given an attribute that resizable and I can movable. मैं इसको move भी कर सकता हूँ and resizable कर सकता हूँ. So it means now, see, so I'm using JavaScript. Okay, so in the coming classes we will definitely study more about JavaScript, but for the sake of explanation मैंने यहाँ पर इसको explain कर दिया. So you can refer to this website Beta Labs जहाँ पर मैंने इस link को use किया हुआ है, how to open the window in a new. You can also do one more thing in the external link. आप क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे पेजेस को आप सेपरेटली एक फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं. लेट मी डू दैट फॉर, ओके, सो मैं 4 टैग्स को, सारे फाइल्स को उठा के पेजेस के अंदर डालने वाला हूँ. नाउ हियर इफ यू वांट इन क्लास 6, नाउ अभी देख सकते हो कि जो मेरा क्लास 6 है वो बाहर पड़ा हुआ है, और मेरा जो क्लास 2 और क्लास 1 है वो कहाँ पड़े हुए हैं, पेजेस के अंदर पड़े. नाउ लेट्स गो बैक, एंड यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और अगर मैं लिंक टू क्लास 1 पे क्लिक करता हूँ, सी योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस. क्यों? बिकॉज वो दोनों फाइल्स अभी अपने पाथ पे नहीं पड़े. सो पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर क्रिएटिंग द लिंक्स. सो अभी क्या करने वाले हैं, हम इस क्लास 1 एंड क्लास 2 के पाथ्स को स्पेसिफाई करने वाले हैं. सी, इस पाथ को मैं चेंज करता हूँ, सो आई एम राइटिंग दिस डॉट स्लैश. सी, अब हमारा जो पेज है क्लास 1 वाला पेज, वो कहाँ पड़ा हुआ है, पेजेस फोल्डर के अंदर पड़ा है, एंड class 1 डॉट html. Okay, so again here I'm also changing it dot slash represent the current working directory. उस current working directory पे we have pages folder, and here we have class 2 dot html.
Now you can use this uh, folders for so that you can manage your content properly. So I'm going to save the code. Now refresh. Now when I click on the link to class 1, see the class 1 document will be. So you have to be take care about the address. So address is very important. So there are two type of address. One is called relative address. This is called relative address. Okay, because see here the path is not complete. The path is not complete. This address is called an absolute address because here uh, you have provided the entire part of the of what part of the website. So that is called absolute address. Okay, and that is relative address. Relative address means related to your project, related to your website. So that is relative address, and that is called absolute address. This is also an absolute address, the address of your actual website. Okay, understand? सो सी अभी तक हमने जितने भी टैग्स पढ़े हैं दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल लिंकिंग. इसको हम एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं बिकॉज एक्सटर्नल लिंकिंग इज बेसिकली यूज टू लिंक टू अ डॉक्यूमेंट्स आइदर ऑन अ सेम वेबसाइट और लिंक टू अ डॉक्यूमेंट इन अ अनदर वेबसाइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल लिंकिंग. सी इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? जब भी सी अभी तक क्या हो रहा है, हम अगर आप इस वेबसाइट को देखें देयर आर वेरी ह्यूज लेंथी वेबसाइट. देखो, so sometime we have to create one page application, one page website. So in one page website the entire content grow in height. वो आपका जितना भी कंटेंट होता है वो हाइट में ग्रो होता है. ओके, सो इफ यू वांट दैट यू कैन रेफर टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, तो वहां पर हम इंटरनल लिंकिंग यूज करेंगे. ओके, कैसे यूज करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन दिस. Okay, so let's create another file. I make another internal linking. So for internal linking, I'm going to create another file here that is class 6a dot html. Now again, I'm going to create the skeleton, and here I'm specifying internal linking. Okay, now what is internal linking? I already explained. See, internal linking means linking to a section of your page. एक ही पेज पे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे लिंक करना चाहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग. हाउ वी कैन क्रिएट द इंटरनल लिंकिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट सम लिंक्स. सो अगेन आई एम यूजिंग द ए टैग एंड एच रेफरेंस के अंदर मैं अभी हैश लगाने वाला हूँ. नाउ व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ ओनली हैश? द हैश मीन्स that you want to refer to your current file. आप अपने करंट पेज को ही रेफर करते हो, अपने करंट पेज को ही रेफर कर रहे हो. ओके, नाउ हियर आई एम राइटिंग सेक्शन 1. मैं यहाँ सेक्शन 1 लिख देता हूँ. ऐसे आई एम गोइंग टू क्रिएट 4 लिंक्स, 5. लेट्स क्रिएट 5. so this is section 2, this is section 3, this is section 4, and this is section 5. Let's see the output on your browser screen. So I'm going to open in the browser. So here you will find there are 1 2 3 4 5 sections. Okay, now I'm going to create the content part. Okay, so मैं यहाँ नीचे जाता हूँ. I'm going to create a heading h2 and saying as section 1. Okay, and also going to create a paragraph with lorem, say 700 words. Okay, now I'm going to copy these two uh, for multiple times, 3, second times, third, fourth, fifth. Now I'm going to change this to section 2. This is section 3, section 4, and section 5. Now I'm going to save the code. Whenever I save the code, it's become auto format because I'm using an extension that is called. Okay, now let's see the output. Okay, now I'm going to open the uh, browser and I'm going to refresh the screen. Now you will able to find there are section 1, there are section 2, there are section 3, there are section 4. See the entire website. See the website is now becomes properly grow हो चुकी है. Okay, okay, now see जब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं section 4 पे क्लिक करूँ तो I am going to jump to the section 4 immediately. Now I'm connecting. See, but here I'm using hash. So hash means you have to be stay on your page. But मैं अपने ही page पे I'm staying on the page, but I want to link to the section 4. So how we can link? So in order to link to your document, you can use a tag called ID attribute. You can use an attribute called ID attribute.
Now this id attribute basically used for creating labels. इसकी हेल्प से आप labels create कर सकते हो. Like in C programming we use goto statement. Now goto statement is basically used for linking to a other part of your program. Similarly we are going to use this way here. हम यहाँ पर भी वही use करने वाले हैं. So I use this id attribute for linking to a section of the page. So how we can use this? Okay, now so this is your section 1. अभी क्या करने वाला है, इस सेक्शन 1 पे मुझे कहाँ जंप करना है, सेक्शन 1 पे जंप करना है. नाउ इट मीन्स आई वांट टू stay on the page, and on the page I want to jump to a section 1. Okay, so this is our label, this section 1 is our label. So मैं यही label अपने h1 पे बनाने लगा हूँ. So I can use id attribute and I have to specify the label name that is section 1. Okay, now second जो आपका label होगा that is section 2. So I'm representing section 2. Now this will be section 3, section 4 and section 5. Now I have to specify all the labels using an id attribute in all the h2 tags. So I'm going into the h2. Here it will be id attribute with section 2. Okay, let's copy this and going down. So in h3 I'm giving label 3. Going down for section 4 I'm giving section 4 as a label. Now last in section 5 I'm giving label to 5. Okay, now I'm going to save the code and let's go back to the page. Let's find internal linking. Okay, let me close everything. Now see, I'm going to refresh the screen. Now see, now I'm going to click on these links. So these links are basically अब hyperlink की तरह काम करेंगे, internal linking की तरह काम करेंगे. कैसे? Now I'm going to click on section 4. When I click on section 4, see, I'm jumping to the section 4 immediately without any delay. Okay, let me go back into the top again. Now I'm going to click on section 3. It's working. Section 2, it's working. Section 1, because I'm on the section 1, so it also showing section 1. So it means now I can connect to a part of your internal page. जब आप अपने पेज पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे लिंक कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, so that is called internal linking. Okay, now see, I'm going to go to the end of the section. Now see, in the some website you will find another link that is go to the top. यहाँ पर नीचे एक बना होता है go to the top. Now we can also create that go to the top. So आप लास्ट में जाओ and here just specify p, एक पैराग्राफ बना दो. Okay, and you can write create a anchor, h reference के अंदर डाल दो hash top and just specify go to top. Okay, and you can also specify your style as text aligned right. आप इसको right में specify कर सकते हो. Okay, now just save the things. Now अभी हमने top तो बना दिया है, but we have to specify the label at the top. So वापस ऊपर जाओ, go at the top level and here and this I'm going to specify anchor, and now the id will be top. Now there is no need to specify any text because see, when I click on the go to top, it will automatically go in the top, so there is no need to enclose some text here. Okay, now I'm going to save the things and now you will find I'm going to refresh and see, यहाँ पर आपको एक नीचे right side में एक आपको text दिख रहा है, that is go to top. Okay, look at this, go to top. Now when I click on this text I'm going to jump to the starting of the website. Okay, so you can create this kind of link using a internal linking. So this is all about internal linking. Now let's talk about more. Now see, there is one more attribute that is called title. Okay, now how we can use this title? See, when I'm using here, I'm going to write title. This basically a core attribute. Core attribute means this attribute being can be used with anything, any tag. Okay, in the title I'm saying link. I'm just writing some text, link to
section 1. Okay, now let me copy this, and I'm also writing in section 2 as well. Now you can save the document, and you can go back and refresh. See, when I move my cursor, see, go here. When I move my cursor over this section 1, see, there is a tooltip. There is a tooltip showing here. Okay, see, this link to the section 1. Similarly, I'm moving down, and you can find like link to the section 2. So this is a tooltip that can be represented here. So title will help you to create a tooltip. You can add this tooltip on every tag. On every tag. See, this is a paragraph. You can also add this title attribute for this paragraph also. Let me show that. So I'm going into paragraph, and I can use that title, and I'm saying this is paragraph. Okay, let me save the code, and see, when I refresh the code and I move my mouse over this paragraph, and see, this is a paragraph. It's showing that this is a paragraph. Okay, so title is basically a core attribute. So core attributes means there are some attributes that can be used with every tag is known as core attribute. So title is a core attribute. Similarly, we can use on click, on press. So on press, on click, these are events. So there are some events that can be used with every tag, and that is known as, okay. Now till now we have created so many links, either internal link or external link. But if you want to make your link as a button, आप क्या चाहते हो कि आपका लिंक एक नॉर्मल टेक्स्ट ना दिखे, इट शुड बी लुक सम डिफरेंट. सो यू कैन ऑल्सो मेक योर लिंक टू बी कस्टमाइज. आप उसको एक बटन की तरह भी बना सकते हो. सी, हियर आई एम क्रिएटिंग सम बटन्स. जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर जा रहा हूँ, सो दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, दिस इज अ एंकर टैग, बट मैंने उसको CSS से कस्टमाइज कर दिया है. Okay, now when I move my mouse over this link, see, first of all, these are not a normal text. This looks like a button, and this is also looks like a button. So you can also create uh, create these kinds of button using the CSS styling. So we will definitely study how we can make these buttons as a these text as a button in the coming classes. So I'll just specify here because I have already documented in my website. So you can also do this. Now one more thing, see, you can also make this thing, like you can make your link to be hover. See, when I move my mouse over the link, it becomes a hover. So you can also use some CSS property to make the colors of your text to be changed whenever I move my mouse over the screen. So this is what we call hover effect. So you can also change. Similarly, you can also change the default colors of your anchor tags. See, by default, there are some predefined colors to each element, each hyperlinks. That is by default, that is blue color. See, let me open this. So I'm going to open google.com, and here I'm going to find introduction to HTML. See, there are some links. These are also hyperlinks. Now see, there are some links that are of blue color. So by default, the color of the link is blue. Okay, there are basically three different colors. One is three different colors that can be used with hyperlinking. One is called this link is unvisited link, because अभी तक इस link के ऊपर मैंने visit नहीं किया. So when I visit on this link, okay, and when I go back, see, the color of the link is changed. Now this becomes a violet color. This becomes a violet color. This is violet color, and this is a normal blue color. So it means this link I have already visited. So it will help the user to identify which link I have already visited and which link I am not visited. Okay, so you can change this color combination, and you can customize these color. See, there is one more color. Let me explain. See, when I see, this is violet because I have already visited. So when I click on it, so this is called an active link. अभी तक मैं इसको click करके रखा हुआ है. So that is called active link. And when I leave this, so that will be visited link. So by default, then become a violet. It becomes a violet. So there are three: visit link, or visited link, active link, and only the link. So by default, link is blue, visited link will be violet, and the active link, when I click on the link, that is called an active link. So you can also customize these links color according to your requirement of.
सी अभी तक हमने क्या देखा है, इफ यू till now we have created the links to a so that we can connect to a that particular section of the page. ठीक है, या तो हम किसी एक्सटर्नल लिंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के साथ, या अपनी ही वेबसाइट के किसी डॉक्यूमेंट के साथ क्लिक कर सकते हैं. नाउ इफ यू वांट टू स्पेसिफाई, अगर आप किसी रिसोर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिंक टू अ रिसोर्स, लाइक इफ यू वांट टू कनेक्ट टू अ picture, if you want to connect to some audio file, some video file, some other resource like PDF, so how you can connect to that resource? So here I have already have a picture, मेरे पास एक resource है, that is this picture. I want to connect to this picture, so how we can connect? So for that I'm going to use an anchor tag. Now in hrefs, instead of writing the address of some web page or some document, I can now refer to the address of this resource. So मैं यहाँ पर अपने resource का address लिखने वाला हूँ, like dot slash, that means the current working directory, और उसके अंदर हमारे पास image folder है, उसके अंदर मैं birds.gif को find करना चाहता हूँ. और इसके बाद मैं यहाँ पर एक link लिख देता हूँ, click to view. Okay, click to view. Let me save the code. Now let's see the output in the browser. यहाँ पर मुझे क्लिक टू व्यू आ रहा है. तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड टू दैट डॉक्यूमेंट, आई एम कनेक्टेड टू द पिक्चर. ओके, सिमिलरली अगर आप कोई यहाँ पर पीडीएफ फाइल मेंशन करते हैं, या कुछ ऑडियो फाइल मेंशन करते हैं, या कोई वीडियो फाइल मेंशन करते हैं, you can also access that resource. So links are also used to access the resource as well. Access the resource as well. Now let me explain one more important topic. See, sometime आपने देखा होगा कि एक रिसोर्स बना होता है, वहां पर एक पिक्चर बना होता है, एंड उसके नीचे लिखा होता है क्लिक टू डाउनलोड. ओके, या एक डॉक्यूमेंट होता है, वहां पर लिखा होता है क्लिक टू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट. सो you can also download that particular resource using the hyperlinking. कैसे करते हैं? सी, तो अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया वो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ. Okay, and I'm going to use the image tag, but I will discuss the image tag in the coming class. So I'm using image tag. Now in the source I'm going to specify this source as well. So I'll just paste. Now मैं कुछ attributes use करने वाला हूँ, that is called width 300, and I'm going to specify the height as a 200. That is the height and width of the picture. Okay, now I'm going to write br tag. Now let's see the output in the screen. Okay, now here you will find the picture, and I want that there should be a link. जब मैं उस लिंक पे क्लिक करूं, so this picture gonna be download. This picture will be download. Okay, how we can do that? So मैं यहाँ पर चलता हूँ, सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ click to download. Now I'm not viewing the resource, I want to download the resource, so I will write download. So this will be the text that will be displayed as a hypertext. Now if you want to download that particular resource, you can also specify an attribute that is called download attribute, and you can specify in the value, you can specify the name. You can specify the name कि जब वो उसको डाउनलोड करे तो उसको वहां पर क्या नेम दिखे. So I'm writing birds. ये वहां पर उसको जब वो डाउनलोड करेगा तो उसको birds नाम का फाइल एज अ नेम, जो फाइल का नेम होगा वो birds दिखाई देगा. ओके, नाउ लेट मी सेव द कोड. नाउ लेट्स सी, इसको ओपन कर लेते हैं वापस. ओके, नाउ सी व्हेन आई क्लिक, देखो यहाँ पर मैसेज आ रहा है क्लिक टू डाउनलोड. सो दिस इज अ हाइपरटेक्स्ट, और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सी दैट रिसोर्स हैज बीन डाउनलोडेड. यहाँ पर नीचे डाउनलोड हो गया. क्लिक and see it is being downloaded, and you can see the output. So in this way you can download any resource. You can also provide some PDF also. Okay, आप यहाँ पर PDF भी define कर. So let me go back into 6.html. If you want to download, let me first say I'm specifying booking confirmation, and see it is a ticket. Okay, and click to download the ticket. Okay, now here I have a PDF file, and when I click on the download link, so this ticket will be as ticket.pdf will be downloaded. Now let me save this and let me show the output in the screen. Okay, now this is not a picture, this picture is not considered to that. So when I click on this link, now see
is being downloaded, and you can also view the ticket. Okay, understand? So you can use the hyperlink for downloading the resource as well. You can put the resource on your server, and you can provide your anchor tag for downloading that resource. So you can also use that.